Hello everyone, myself Indrajit Pandey and I welcome you in my YouTube channel NCRT Social Science with Indrajit. And today we are going to start class 8 Social Science chapter 3 The Rise of the Marathas. And this chapter is going to be very interesting. Who were the Marathas? I will tell you who were the Marathas and how they challenged Aurangzeb or the Mughals. I will let you know how they did that and what happened at last. So don't miss this video. Go through the whole video. Let's start the class. The rise of the Marathas. Among the merchants, the hat wearers like the Portuguese and the English, the Dutch, the French, and the Danes also conducted trade. These were those people, those merchants who came from different parts of the world. They came to India. ये इंडिया आए. क्या ये सिर्फ मर्चेंट थे? क्या सिर्फ ये व्यापारी थे? नहीं, ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे. इनकी सोच कुछ अलग थी. These people came to India with a very different thinking, but they are not like other merchants. They're fully intent on entering this land, increasing their territory and propagating their religion. What was the thinking behind this? क्या इनकी सोच थी यहां आने की? Only to make profit? No. The intention was territory expansion. ये चाह रहे थे इनका साम्राज्य, इनका जो क्षेत्र है वो बढ़े. दूसरा, ये अपना धर्म का भी प्रचार करना चाह रहे थे. और इन दो सोच ने इनको भारत आने के लिए प्रेरित किया. ठीक है? Is that clear? Okay. Next, they are obstinate people and navy and gunpowder are their chief weapons. इनके असली हथियार, what was their chief weapons? The first one, navy and gunpowder. They were very good at it. They had the knowledge of navy. They had the knowledge of how to make use of gunpowder. इन्हें पता था इसका इस्तेमाल कैसे करता है. इंडियंस को नहीं पता था. Got it? Their traffic should be controlled and they should not be allowed to bring strong buildings. इनका आवागमन रोकने की जरूरत है. इन्हें फोर्ट्स, किले बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. ये सारे जो वाक्यांश हैं, all these sentences were said by whom? रामचंद्र पंत अमात्य in अदन्य पत्र 1715. ये इनका स्टेटमेंट था. अदन्य पत्र में क्लियरली मेंशन है कि ये चीजें हैं और इनका ये इंटेंशन है, इनकी ये सोच है, तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है. Got it? Okay. Now let's start the chapter. You can see here the Raigad Fort, Maharashtra, with the grand entrance to the palace where Chhatrapati Shivaji Maharaj was crowned in 1674. Shivaji Maharaj was crowned in 1674. Where? In Raigad Fort. In Raigad Fort. So this is going to be one of the important MCQ. It is for competitive exam also. That in which fort, किस किले में शिवाजी महाराज का को राजा घोषित किया गया या उन्हें राजा बनाया गया? जवाब क्या है? रायगढ़ किला. किस साल? 1674 ईस्वी में. एंड इट वाज द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर. और ये मराठा एम्पायर की शुरुआत थी. Now, the question is, who were the Marathas? How did they manage to become the largest pan-India power before the British took over? अब सवाल यह है कि मराठा थे कौन?
और इन्होंने पूरे भारत पे एक तरह से शासन कैसे किया, कैसे कंट्रोल किया? दिस वॉज अ बिग क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू डील दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। व्हाट वेर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस? इनके गवर्नेंस की बहुत सारी खासियत थी, ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अलग था। इन्होंने टैक्स इंपोज किए हुए थे, चौथ, सरदेश मुखी, ये सब क्या है हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद व्हाट इंपैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास में इनका क्या इंपैक्ट पड़ा या इनका क्या स्थान है, राइट? ओके, so all these are big questions and these big questions we are going to discuss. You can see here 1630, the birth of Shivaji Maharaj. Then you can see here, this is the timeline, it is given. Then 1646, beginning of Chhatrapati Shivaji's rule. फिर फिर आप देखिए 1657, फाउंडिंग ऑफ द मराठा नेवी. Then we have some more. 1674, छत्रपति शिवाजी का कोरोनेशन, ठीक है, रायगढ़ किले में, यहां पे देखिए एट रायगढ़. 1677 में दक्षिण दिग्विजय. 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु, ठीक है. और ये है, आगे देखें. अब हम आते हैं, हु आर द मराठास? मराठास है कौन? इनका एक अपना अलग पहचान है, इनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, इनका अपना लैंग्वेज है, इनका अपना खान पान है, इनकी अपनी वेशभूषा है. गॉट इट? ओके. हु आर द मराठास? द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू. दे आर द रियल inhabitants of that land. Which area? Deccan Plateau. And more specifically, present day Maharashtra. Where they are located? They are located in the Maharashtra area. You know Maharashtra, where it is? Okay. They are identified with the language they speak. What language they speak? उनकी बोली क्या है? मराठी. उसके बाद, which has had a rich and continuous literary history. And since the 12th century, in this chapter we'll see them rise as a powerful political entity that will alter the course of Indian history. During the 13th century, most of Maharashtra was ruled by Yadav dynasty. मराठा से पहले जब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो वहां पर यादवों का शासन था पहले. महाराष्ट्र, इट वॉज रूल्ड बाय द यादवास, ठीक है, यादव डायनेस्टी. It was ruled by Yadav dynasty. With Devgiri, present day दौलताबाद as its capital. अब यहां पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, दो अलग अलग संतों की यहां पे पिक्चर्स लगी हैं. दिस वन इज संत रामदास, अनदर वन इज showing Sant Tukaram. There were so many saints who came from Maharashtra. They were from different social backgrounds, from different caste. Got it? Okay. So Yadava, they had, what was their capital? Their capital, see, Yadava dynasty with Devgiri as its capital. देवगिरी टू दौलताबाद. याद है, मुझे लगता है मैंने आपको पढ़ाया था ये चीजें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में. गॉट इट? व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक ट्राइड टू शिफ्ट हिज कैपिटल, एंड ही शिफ्टेड because he thought that when he will shift to Daulatabad, it will be easier to control the whole country. It means it will be easier for him to administer. Got it? But it was a big failure. फिर उसने वापस चेंज किया. ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको. ओके.
So during the 30th century, most of Maharashtra was ruled by Yadava dynasty with Devgiri, present day Daulatabad, as its capital. In the early, this is the timeline, okay? थोड़ा सा बता दें, इस टाइमलाइन को कंटिन्यू कर देते हैं. 1754 बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ओवर दिल्ली, और 1761 बैटल ऑफ पानीपत. इसमें हुआ क्या था? मराठा का डिफीट हुआ था, राइट? ओके. एंड ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इट इज 1761. ये चीजें याद रखने की है, और इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आप याद रख सकते हैं. ठीक है, ओके. Then 1775, you can see here, 1775 to 1782, first Anglo-Maratha War. What is Anglo-Maratha War? Between the British and Maratha. And what was the result? Maratha became victorious. Then 1818, see here, is it something more? No. At last in 1818, the third Anglo-Maratha War, it was the end of Maratha power. ठीक है, तो मराठा पावर आखिर खत्म क्यों हुआ? इतना पावरफुल, अंग्रेजों को डिफीट किया, इतना पावरफुल, पूरे देश में उसका साम्राज्य एक तरह से स्थापित हो गया, मुगलों को कड़ी टक्कर दी, फिर भी क्या कारण था? बात करते हैं. 14th century, the Yadava dynasty was overcome by the Khilji Sultanate from Delhi. 14th century, the Yadav dynasty was overcome. It means Yadav dynasty was overcome by Khilji dynasty. Name two important Khilji rulers: Jalaluddin Khilji, and the most important one is Alauddin Khilji. मैं जब पढ़ाऊंगा तो बीच में जब मैं इस तरह का सवाल करूंगा आपसे, तो आपको तुरंत ये चीजें रिकॉल करनी है, इस सर ने क्या पढ़ाया था. ठीक है, ओके. तो महाराष्ट्र में सबसे पहले जब बात करते हैं तो यादव आए, यादव डायनेस्टी. इट वाज रूल्ड बाय यादव. देन इट वाज टेकन ओवरथ्रोन बाय खलजी और खिलजी, राइट? खिलजी डायनेस्टी. अब यहीं से कहानी स्टार्ट होगी. Amidst such political changes, the cultural traditions continued, particularly those related to bhakti, devotion to the divine or a particular deity. Between the 7th and 17th century, for spiritual upliftment, saints, seekers from several parts of the India preferred the path of bhakti to merely external ritualism. लोगों के अंदर भक्ति आने लग गई, भक्ति का एक सैलाब आने लग गया. जो लोग सत्य की खोज में थे, ईश्वर की खोज में थे, जो अपने आप को भक्ति, ईश्वर भक्ति में लीन करना चाहते थे, इन सभी लोगों ने भक्ति की ओर, कंप्लीट डिवोशन की ओर अपने आप को अग्रसर कर दिया. दे मूव टुवर्ड्स कंप्लीट डिवोशन, राइट? These saints coming from diverse sections of society composed devotional songs, and all these saints, maybe Sant Tukaram, Sant Ramdas, all these saints, there are several. All these saints, they were from different backgrounds, different caste. They started writing song, they started writing hymns, they started writing poetry in their language, the language of the common people. And what it was? It was Marathi, right? It was Marathi, the language of the masses of Maharashtra. तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं ना जब आप उनकी भाषा में बात करते हैं, और यही चीजें हुई. So all these saints, they started connecting with the local people in the local language, so that all the Marathis will understand what is devotion, what is God, what is bhakti, everything. And later, just now you will come to know that they started translating Ramayana and Bhagavad Gita, all these things into Marathi language, so that
it will go to larger number of Marathi people and they will understand, okay, the importance of these books. In Maharashtra, many saints like Dhyananeshwar, Sant Namdev, Sant Tukaram, Ramdas, etc. gained popularity at this time. They helped translate important texts like Upanishad and the Bhagavad Gita into Marathi. They started translating the Upanishads and Bhagavad Gita into Marathi, making their philosophy accessible to the people. Some also focused on social organization and political awareness. Like the Sikh, no, the rise of the Sikh when we started. In the beginning, they were not a military organization. No, they did not change into military at that time. They did not have that thinking. It was totally spiritual. But because of the exploitation or because of the role or governance of the Mughal emperors, it forced them to become a strong military power. Same thing happened with the Marathas. See here. यही चीजें हुई थी इनके साथ भी. Similar to the Sikh Gurus, as a result, the society acquired a solid cultural foundation which later helped the Marathas to organize themselves into a political power. यही चीजें मराठा के साथ हुई. जब इनका शोषण होना स्टार्ट हुआ ना, तो इन्होंने इनके अंदर एक होती ना एक भावना, लड़ाकू वाली भावना, वो जन्म लेना स्टार्ट की. ये ऐसे थे नहीं. पॉलिटिकल चेंजेस ऐसे हुए कि इनको अपने आप को बदलना पड़ा. By the 17th century, some Maratha chiefs made early attempts at establishing sovereignty, but they proved unsuccessful. शुरुआत में कुछ मराठा चीफ हिम्मत किए, उन्होंने एक सोवरेन रूल अपने टेरिटरी में उन्होंने स्टार्ट किया कि हमारा अपना कंट्रोल होगा, नो एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस विल बी देयर, बट दे could not bring all the Marathas together. They became unsuccessful. ठीक है, उन्हें पूरी तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. ठीक, तो ये आज अब इसमें हम लोग देखेंगे until छत्रपति शिवाजी rose to power and brought the Marathas together. But who was छत्रपति शिवाजी? और ये जो है ना छोटे छोटे चीफ्स, मराठा चीफ्स, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए. They could not become successful जब तक शिवाजी नहीं आए. एंड शिवाजी वॉज द मेन पर्सन. छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत आदर सम्मान है. उन्होंने सारे मराठा को एक साथ ला करके एक साथ लाने का काम किया. He brought all the Marathas together. He united all the Marathas and he gave a big fight to the Mughals. और तब दुनिया को पता चली, पूरे देश में लोगों को पता चला कि मराठा भी कोई है. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई विल लेट यू नो, एंड आई हैव स्टार्टेड बाइलिंगुअल, राइट, सो दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड. इंग्लिश हिंदी में दोनों मिला के पढ़ा रहा हूं ताकि सभी लोग इसे समझ सकें. टेक इंटरेस्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इन टुडेज वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक, in the next video we'll discuss foundation of Maratha power and the rise of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So hope you have enjoyed this video. Thank you very much. Please subscribe my channel, like, share. Thank you very much.